Hello guys, I am Shubham from Tutorials. This is the part 4 of the DNA application PYQ series. So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever the video is out. This is absolutely free from your side, but it will help us grow. The first question, when circular plasmids having a centromere sequence are transformed into yeast cells, they replicate and segregate in each cell division. However, if linear chromosome is generated by cutting the plasmid at a single site within a restriction with a restriction endonuclease, the plasmids are quickly lost from the yeast. It is known that genes on the plasmid are lost because of the instability of the chromosome end. What could be done so as to restore its stability and can be inherited? Okay, so circular plasmid है, राइट, जिसके पास सेंट्रोमेयर सीक्वेंस है, दिस इज ट्रांसफॉर्म इनटू ईस्ट सेल. ओके, सो ये रेप्लिकेट होगा, सेग्रीगेट होगा. नाउ इसको कट किया एंड देन दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू लीनियर क्रोमोसोम. ओके, आफ्टर कटिंग विद अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड, प्लाज्मिड्स वर लॉस्ट फ्रॉम द ईस्ट, मतलब ईस्ट से ये लॉस्ट होगा. ओके, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम एंड्स, राइट. इंस्टेबिलिटी होने के कारण ये लॉस्ट होता है. तो स्टेबिलिटी को अगर रिस्टोर करना है एंड इनहेरिट भी करना है, तो व्हाट शुड बी डन? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज मिथाइलेशन ऑफ द एडेनाइन रेसिड्यूज ऑफ द प्लाज्मिड. तो नहीं, ये तो आंसर नहीं हो सकता. कॉम्प्लेक्सिंग द प्लाज्मिड एंड्स विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, नो. बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेलोमेयर सीक्वेंसेस to the end of plasmid, yes. Okay, and the next is by incorporating acetylated histone protein to the plasmid ends. तो ये भी नहीं होगा. Okay, option 3 will be the answer because telomeric sequence अगर हमने join किया then it will give the stability. Basically the centromere sequence यहाँ पे लिखा है and centromere telomere से डिफरेंट नहीं होता, दे आर सेम. okay, मतलब सिमिलर है. So option 3 will be the answer. Next question, as topoisomerases play an important role in replication, a large number of anti-cancer drugs have been developed that inhibit the activity of these enzymes. Which of the following statements is not true about topoisomerases as a potential anti-cancer drug target? Okay, मतलब topoisomerases क्या करेंगे? We know this will prevent the supercoiling, right? तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. Now anti-cancer drugs target these enzymes, okay, and that inhibit the activity of these enzymes, right? तो इसमें से जो not true मतलब incorrect statements we have to identify. The first statement is, as cancer cells are rapidly growing cells, they usually contain higher levels of topoisomerases. Yes, ये करेक्ट होगा. ओके, ये ऑप्शन करेक्ट होगा बिकॉज कैंसर सेल्स में डिवीजन फास्ट होता है, तो टोपोआइसोमरेज का भी लेवल हाई होगा. वी हैव टू सी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट. तो ये ऑप्शन करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता बिकॉज ये करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रांसिएंट डीएनए ब्रेक्स created by topoisomerases are usually converted to permanent breaks in the genome in the presence of topoisomerase targeted drugs. Okay, मतलब जो breaks होते हैं by topoisomerase, those will be converted to permanent breaks. Right, permanent breaks वो accumulate होंगे, तो ये भी correct है. Right, मतलब वो break है, repair नहीं होगा in the cancer cell. We know cancer cell में रेजिस्टेंस है, डैमेज टॉलरेंस वगैरह कुछ भी हो, देन ऑल्सो इट कैन डिवाइड फास्टली. मतलब म्यूटेशंस बहुत सारे एक्यूमुलेट होते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट, एज कैंसर सेल्स ऑफन हैव impaired DNA repair pathways,
Okay, as I said, DNA repair pathways impaired होते हैं कैंसर सेल्स में. They are more susceptible towards topoisomerase targeted drugs. Yes. ओके मतलब टोपोइसोमरेज टारगेटेड ड्रग्स से ये ससेप्टिबल है. तो दीस आर करेक्ट, राइट. अगर ऑप्शन तीनों ऑप्शंस ट्रू स्टेटमेंट है तो ऑप्शन 4 इनकरेक्ट होगा. ओके, लॉजिकली वी कैन थिंक दैट द ड्रग्स which specifically target topoisomerases usually do not affect normal fast growing cells. Yes, it is 100% incorrect. Why? Because यहाँ पे दिया है जो ड्रग्स टोपोइसोमरेज को टारगेट करेंगे that will not affect normal fast growing cells. तो ऐसे नहीं होगा बिकॉज टोपोइसोमरेज तो नॉर्मल सेल्स में भी है एज वेल एज कैंसर सेल्स में भी है. दैट इज नॉट द स्पेसिफिसिटी. ओके, स्पेसिफिसिटी नहीं है एंड दैट इज व्हाई कैंसर इज हार्ड टू ट्रीट, राइट. सो इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल. तो ये स्टेटमेंट 4 कंप्लीटली इनकरेक्ट है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. Following statements have been made about removal of supercoiling produced by DNA unwinding and the replication fork. Okay, DNA unwinding से ही supercoiling produce होती है, right? And DNA unwinding is done by helicase. So let's see the statement. First of all, what you have to do? All correct statements we have to identify. Accumulation of supercoil is the result of DNA helicase activity during unwinding of DNA. Yes, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, प्रोड्यूस बाय डीएनए अनवाइंडिंग. तो डीएनए अनवाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए हेलिकेस एंड डीएनए हेलिकेस की वजह से ही सुपर कॉइलिंग होगा. ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है. प्रॉब्लम ऑफ डीएनए सॉल्विंग इज वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर क्रोमोसोम और बैक्टीरिया and not for linear chromosome. See, again this is wrong statement. Okay, क्या दिया है? Valid only for, मतलब ये सिर्फ सर्कुलर क्रोमोसोम के लिए वैलिड है एंड नॉट फॉर लीनियर. ऐसा नहीं है. सर्कुलर क्रोमोसोम हो या लीनियर क्रोमोसोम हो, दोनों में सुपर कॉइलिंग की प्रॉब्लम होगी, राइट. सो ए करेक्ट, बी रॉन्ग. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 नहीं हो सकता आंसर. ए एंड सी यस. ऑप्शन 3 करेक्ट है. ओके, बी इनकरेक्ट है, तो उसी से हमारा आंसर आएगा, राइट. लेट्स चेक अदर स्टेटमेंट. सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए इज रिमूव्ड बाय टोपोइसोमरेजेस by breaking either one or both strands of DNA on the unreplicated DNA in front of replication fork, right. So either one strand is cut or both the strands are cut. So this is correct. Both topoisomerase 1 and topoisomerase can remove positive supercoiling during replication. Yes. Okay. So we have completed with the DNA replication PYQs. From the next video series of this particular molecular biology PYQs, we will start with DNA repair, right. उसके PYQs हम solve करेंगे. So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.